welcome to E-Town News, जहां आपको मिलेगा डेली डोज ऑफ बॉलीवुड न्यूज, फैशन ट्रेंड्स, टीवी एंड सोशल मीडिया से जुड़े हर अपडेट. A show which gives you the day's lowdown of all the best happenings in the world of glamour. तो इंतजार किस बात का? Let's take a look at today's headlines. किस पर उर्फी जावेद ने लगाए सीरियस एलिगेशंस? क्यों नेटिजन्स को लगा शिबानी दांडेकर हैं प्रेग्नेंट? नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने शेयर किया अपने रैग्स टू रिचेस का सफर. शिबानी दांडेकर की इस पिक्चर को देखकर उनकी प्रेगनेंसी को लेकर स्पेक्यूलेशंस हुए शुरू. नेटिजन्स पूछ रहे हैं, क्या शिबानी दांडेकर हैं प्रेग्नेंट? लेकिन क्या इस रूमर में किसी भी तरह की है सच्चाई? शादी के एक दिन बाद ही आई शिबानी दांडेकर और फरहान अख्तर की पिक्चर से मिला क्लैरिफिकेशन. बॉलीवुड सेलेब्स जब भी शादी करते हैं, उनकी शादी की हर एक पिक्चर में नजर आने वाले सेलेब्स से लेकर फोटो के एंगल, सेलेब्स के एक्सप्रेशंस पर स्पेक्यूलेशंस शुरू हो जाते हैं. और ऐसा ही कुछ हुआ जब फरहान अख्तर और शिबानी दांडेकर की ये पिक्चर सामने आई. दरअसल इस पिक्चर में शिबानी दांडेकर का स्टमक दिखा बम्प्ड अप. अब लोगों ने ये नहीं सोचा कि हो सकता है कि इस फोटो का एंगल हो कि शिबानी दांडेकर का पेट इस तरह से दिख रहा है. यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि ये पिक्चर काफी दूरी से ली गई है. यही वजह है पिक्चर क्लियर भी नहीं है. लेकिन जरा देखिए कैसे सोशल मीडिया पर यूजर्स का था सिर्फ एक ही सवाल. एक यूजर ने लिखा, इज शी प्रेग्नेंट? एक दूसरे यूजर ने लिखा, ट्रेंडिंग चल रहा है, पहले बेबी फिर शादी. वहीं एक यूजर ने ये भी लिखा कि इट्स बिकॉज ऑफ द ड्रेस. For a sec I thought it was a baby bump, but I think it is just the dress that makes it look like that. दरअसल कुछ यूजर्स ने फरहान अख्तर और शिबानी दांडेकर की शादी को दिया मिर्जा और वैभव रेखी की शादी से जोड़ दिया और उन्हें लगता है कि हर एक सेलेब पहले प्रेग्नेंट होते हैं फिर शादी. लेकिन फरहान अख्तर और शिबानी दांडेकर को इस स्पेक्यूलेशन पर क्लैरिफिकेशन देने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि फरहान अख्तर और शिबानी दांडेकर शादी के बाद खुद मीडिया के सामने आए और इन क्लियर पिक्चर्स को देखकर साफ है कि शादी से आई पिक्चर का एंगल और ड्रेस ऐसी थी कि ये स्पेक्यूलेशन शुरू हुए. शादी के बाद खुद फरहान अख्तर और शिबानी दांडेकर मीडिया के सामने आए, जहां फरहान अख्तर दिखे इन कुर्ता और नेहरू जैकेट में, वहीं शिबानी दांडेकर फ्लोरल नेट साड़ी में दिखी स्टनिंग. इन पिक्चर्स और विजुअल्स में शिबानी दांडेकर और फरहान अख्तर नजर आए सुपर हैप्पी और इनके चेहरे की मुस्कुराहट बता रही थी हाउ हैप्पी दे आर. इसके अलावा शिबानी दांडेकर और फरहान अख्तर के लिए जोया अख्तर ने थ्रो की एक शानदार पार्टी, जहां शिबानी दांडेकर और फरहान अख्तर के कई करीबी नजर आए. और इस पार्टी का एक इनसाइड वीडियो भी सामने आया है, जिसमें शिबानी दांडेकर अपने फ्रेंड्स और सिस्टर्स के साथ एंजॉय करती दिख रही हैं. आपको बता दें, फरहान अख्तर और शिबानी दांडेकर लगभग 4 सालों से रिलेशनशिप में थे और मोर देन 3 इयर्स इन दोनों ने एक दूसरे को डेट किया और रिसेंटली इन्होंने डिसाइड किया टू गेट मैरिड. पैंडेमिक के दौरान भी ये दोनों एक साथ ही रहे और सोशल मीडिया पर इनका PDA अक्सर नजर आता था. We wish Farhan Akhtar and Shibani Dandekar all the best for their new innings. मैं तो अभी शुरुआत है. अभी अगर अभी से अपने आप को मानने लोगों के मैं सफल हो गया तो वो कहीं ना कहीं करप्शन आने लगेंगे दिमाग में. तो मैं नहीं मानता. मेरा काम है काम करते रहना. जब मैं काम करूँगा तो मेहनत करूँगा और कोशिश करूँगा कि दुनिया की सबसे अच्छी एक्टिंग करने की कोशिश करूँगा. ये इस कॉन्फिडेंस से मैं आता हूँ. नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने अपनी रैग्स टू रिचेस की कहानी को फैंस के साथ किया शेयर. नवाजुद्दीन सिद्दीकी के ड्रीम हाउस का सपना हुआ पूरा. नवाजुद्दीन सिद्दीकी का कहना है कि उनका पर्सनल बाथरूम उनके पुराने घर से बड़ा है, लेकिन अपना ड्रीम हाउस अपने डैड को ना दिखा पाने का नवाजुद्दीन सिद्दीकी को है बेहद दुख. नवाजुद्दीन सिद्दीकी का मुंबई में ड्रीम हाउस का सपना पूरा हो चुका है. आज वो मुंबई में लग्जूरियस व्हाइट बंगलो ओन करते हैं, जो उन्होंने बॉलीवुड में अपनी सफलता के बाद लिया है. अपने सपनों के आशियाने पर नवाजुद्दीन सिद्दीकी का कहना है, आज जितना बड़ा मेरा पर्सनल बाथरूम है उतना सा मेरा घर हुआ करता था. When I moved to Mumbai, I stayed in such a small place which I shared with 4 other budding actors.
वो मेरा कमरा इतना छोटा था कि अगर मैं डोर खोलूं तो किसी के पैरों में लग जाता था, बिकॉज वी ऑल यूज्ड टू ले आवर बेड्स ऑन द फ्लोर व्हेन वी स्लेप्ट देयर। धीरे धीरे आई स्टार्टेड शेयरिंग माई रूम विद 3 people, then with 2, and it is only from 2005 that I started living alone. वैसे जहां नवाजुद्दीन सिद्दीकी को अपने नए घर की खुशी है, वहीं उन्हें इस बात का दुख भी है कि उनके डैड उनके इस घर को देखने से पहले ही इस दुनिया से चले गए। अपने डैड को याद करते हुए he said, I remember when my father visited me in Mumbai a few years ago. He got very upset and said, ये किस तरीके के कबूतर खाने में रहते हो तुम लोग? I was staying in a 3 BHK apartment then, which was really small compared to the huge place in our hometown, which dad loved. उनका मन मुंबई के घर में नहीं लगता था. So I always had this thing in my mind that I would get him to a bigger place in Mumbai one day. But he passed away before that. I wish my dad could see this bungalow. वैसे यहाँ नवाजुद्दीन सिद्दीकी का ये भी कहना है कि वो अपने बंगलो से फैसिनेटेड नहीं है, क्योंकि उन्हें लगता है कि एक्टर का घर चाहे जितना भी बड़ा क्यों ना हो, लेकिन उसकी लाइफ टाइनी वैनिटी वैन में गुजर जाती है. एक्टिंग इज नॉट ए कंप्लीट आर्ट. वो बहुत सारे कंपोनेंट्स से मिल के बनती है. फॉर एग्जाम्पल जैसे उसमें मेकअप का भी बहुत बड़ा हाथ होता है, कॉस्ट्यूम का भी, सेट का भी, बैकड्रॉप जितनी भी है, तो सारी चीज़ें जैसे हमारे संस्कृत प्लेज में भी कहा गया है, संस्कृत नाट्यशास्त्र में भी कहा गया है कि आहार्य, वाचिक, सात्विक और आंगिक अभिनय 4 प्रकार के अभिनय होते हैं, तब जाके आप कंप्लीट कैरेक्टर लगते हैं. नवाजुद्दीन सिद्दीकी ढेर सारे लोगों के लिए हैं इंस्पिरेशन जो अपना करियर बनाना चाहते हैं इन इंडस्ट्री. उर्फी जावेद ने एक कास्टिंग डायरेक्टर ओबेद अफरीदी पर लगाए सीरियस एलिगेशन. उर्फी जावेद ने स्क्रीनशॉट शेयर करके किया रिवील, उनसे कॉम्प्रोमाइज करने के लिए कहा गया फॉर अ म्यूजिक वीडियो. ओबेद अफरीदी ने उर्फी जावेद के एलिगेशन को बताया गलत, लेकिन उर्फी जावेद के आरोपों पर उन्हें मिला प्रियंक शर्मा का सपोर्ट. बिग बॉस डिजिटल की कंटेस्टेंट और सोशल मीडिया पर अपने बोल्ड फैशन चॉइसेस के लिए जाने जाने वाली उर्फी जावेद ने रिसेंटली सोशल मीडिया पर एक कास्टिंग डायरेक्टर पर सीरियस एलिगेशन लगाकर सबको हैरान कर दिया. उर्फी जावेद का साफ कहना है कि इस कास्टिंग डायरेक्टर ने उन्हें कहा टू कॉम्प्रोमाइज फॉर अ म्यूजिक वीडियो. उर्फी जावेद का कहना है कि जब उन्होंने इस म्यूजिक डायरेक्टर को कहा वो उसे एक्सपोज कर देंगी, तो वो उर्फी जावेद पर हंसने लगा. उर्फी जावेद ने रिवील किया है कि बहुत सारी लड़कियों ने इस कास्टिंग डायरेक्टर के खिलाफ एलिगेशन लगाए हैं. उर्फी जावेद ने इस चैट को भी किया सोशल मीडिया पर शेयर. उर्फी जावेद ने कई लड़कियों की कंप्लेंट के स्क्रीनशॉट्स को शेयर करते हुए लिखा, Of course, no one will trust so many girls speaking against him. This is so sick. आगे उर्फी जावेद का कहना है, I've worked with so many people. Why will I accuse you of anything if we end up on good terms? This isn't even about the money he owes me anymore. उर्फी जावेद ने इस कास्टिंग डायरेक्टर पर एलिगेशन लगाते हुए ये भी कहा, I'm fighting against him because he is a sexual predator and I want everyone to know girls are not safe around him. I work hard for my money and demanding my own money isn't a crime, but sexually assaulting is. वैसे उर्फी जावेद के एलिगेशन पर रिप्लाई करते हुए इस कास्टिंग डायरेक्टर ने उर्फी जावेद के साथ कुछ पिक्चर्स पोस्ट करते हुए लिखा है कि अपना काम निकल जाता है तो लोग बदनाम करने लगते हैं. वहीं इस एलिगेशन पर रिस्पॉन्ड करते हुए उर्फी जावेद ने कहा इस कास्टिंग डायरेक्टर ने उन्हें उनके पैसे नहीं दिए, और जब उन्हें पता चला कि कई लड़कियों के साथ उसने मिसबिहेव किया है तो उन्होंने इस कास्टिंग डायरेक्टर को एक्सपोज करने की तैयारी की. वहीं उर्फी जावेद को एक्टर प्रियंक शर्मा से सपोर्ट मिला है और उनका कहना है कि इस कास्टिंग डायरेक्टर ने उनकी एक फ्रेंड के साथ भी कुछ ऐसा ही किया था, जिसके बाद उर्फी जावेद ने प्रियंक शर्मा को कहा थैंक्स फॉर सपोर्टिंग हर. वैसे उर्फी जावेद के ये एलिगेशन सीरियस है, ऐसे में इस मामले को इन्वेस्टिगेट भी किया जाना चाहिए. अब देखना होगा क्या इस कंट्रोवर्सी में इन्वॉल्व्ड पार्टीज लीगल रूट लेते हैं या नहीं.
लव बर्ड्स शमिता शेट्टी और राकेश बापट का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और इनके फैंस कर रहे हैं सोशल मीडिया पर प्यार की बरसात और हैशटैग शरा कर रहा है सोशल मीडिया पर ट्रेंड। कंगना रनौत के डायरेक्ट अटैक पर आलिया भट्ट ने दिया जवाब। आलिया भट्ट ने कोलकाता में अपनी फिल्म के प्रमोशन के दौरान कहा, लॉर्ड कृष्णा हैड सेड इन द गीता दैट इन एक्शन इज एन एक्शन, दैट्स ऑल आई वांट टू से। आपको बता दें, कंगना रनौत ने आलिया भट्ट की फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी को लेकर कहा था, दिस फ्राइडे 200 crore विल बी बर्न्ड टू एशेस एट द बॉक्स ऑफिस फॉर अ पापा मूवी माफिया डैडी की परी हु लाइक्स टू कीप अ ब्रिटिश पासपोर्ट बिकॉज पापा वांट्स टू प्रूव दैट rom-com bimbo can act. Biggest drawback of the film is wrong casting. ये नहीं सुधरेंगे. These people won't change. No wonder screens are going to South and Hollywood films. Bollywood is destined for doom. जब तक मूवी माफिया has power. वैसे आलिया भट्ट का रेट्रो लुक ड्यूरिंग गंगूबाई काठियावाड़ी प्रमोशन हो रहा है सोशल मीडिया पर वायरल। अनुष्का शर्मा अपनी फिल्म चकड़ा एक्सप्रेस के लिए खुद को जमकर ट्रेन कर रही हैं और सोशल मीडिया पर अनुष्का शर्मा की ट्रेनिंग की कुछ पिक्चर्स वायरल हो रही हैं। इस फिल्म में अनुष्का शर्मा इंडियन क्रिकेटर झूलन गोस्वामी की जर्नी को सिल्वर स्क्रीन पर पोर्ट्रे करेंगी। अजय देवगन ने काजोल के साथ अपनी एनिवर्सरी को खास अंदाज में सेलिब्रेट किया। अजय देवगन ने इस पिक्चर को सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए लिखा, रिमाइंडर। दरअसल कॉफी विद करण पर जब काजोल और अजय देवगन आए थे तो यहाँ अजय देवगन अपनी एनिवर्सरी डेट को ही भूल गए थे। सिद्धार्थ मल्होत्रा का पेट ऑस्कर अब इस दुनिया में नहीं रहा। सिद्धार्थ मल्होत्रा ने सोशल मीडिया पर अपने इस दुख को शब्दों में बयान करते हुए लिखा, राइटिंग दिस विद अ हेवी हार्ट एंड मॉइस्ट आईज, माय ऑस्कर इज नो लॉन्गर इन दिस वर्ल्ड, ही इज लेफ्ट अ मैसिव वॉइड इन माय हार्ट, बीइंग माय फैमिली हियर इन मुंबई फॉर 11+ years. I miss his energy around me. He taught me how to care and be compassionate, taught me that emotional energy is all that matters in this world, whichever form of being it comes from. He was my companion through thick and thin, always greeted me with the same enthusiasm regardless of my day or his health. ऐसे में सिद्धार्थ मल्होत्रा को कंडोलेंस देते हुए आलिया भट्ट, कियारा अडवाणी sent their love. वहीं अनुष्का शर्मा too dropped a comment that read, "Rest in peace, Oscar." Tiger Shroff also said, "I'm so sorry to hear that, bro, but he's happy and healthy wherever he is." ऐश्वर्या राय बच्चन और उनकी डॉटर आराध्या बच्चन को स्पॉट किया गया अनिल अंबानी और टीना अंबानी के बेटे की शादी में। और यहाँ इंटरेस्टिंग बात ये थी कि ऐश्वर्या राय बच्चन और आराध्या बच्चन दोनों ही रेड लहंगा में कर रहे थे ट्विन। सैफ अली खान की सिस्टर सबा अली खान ने सोशल मीडिया पर नेहा धूपिया और यामी गौतम स्टारर फिल्म अ थर्सडे को जहां प्रेज किया, वहीं दीपिका पादुकोण की फिल्म को ट्रोल किया। दरअसल सबा अली खान ने लिखा, थर्सडे ऑन थर्सडे, ऑसम, फैब, फ्राइडे, गहराइयां, आई एम वंडरिंग इफ आई कैन स्विच बैक टू अ थर्सडे। वहीं नेटिजन्स का कहना है कि सबा अली खान का ये कमेंट थोड़ा हार्श था फॉर दीपिका पादुकोण's film. Coming up on the show, the Fame Game cast धक धक गर्ल माधुरी दीक्षित ने लक्ष्वीर, सरन and मुस्कान जाफरी ने Zoom से किया exclusively interact. Hello and welcome. I'm Farhan Sharma and you're watching Zoom TV. Today I have with me an actress who's the epitome of timeless grace and talent, and two young actors who are raring to go and ready to make their mark. Please join me in welcoming Madhuri Dixit Nene, Lakshvir, Saran and Muskkaan Jaferi. Hello everyone, how you doing? Good. I'm great. Firstly, I'd like to say congratulations on the trailer. It's great. And I watched a little bit of the show and it's extremely riveting. I want to start with Madhuri ma'am. You've actually been around the fame game for a pretty long time in your life and you've kind of seen it all, so to say. What, in your opinion, would you say are certain downsides of the fame game? Whether it's your personal experience or that of your friends, contemporaries, or just people that you know in this industry. And then also, what are some really good upsides where you've been really happy and something that's been really great about the fame game? I think the upsides would be, of course, very obvious upsides because, you know, you have the fame, everybody knows you, and, the downside would be that you have fame and everybody knows you. So it's like that. But I think it's great because I don't take fame very seriously. I think I'm more of an actress first. Like I love what I do. I love my craft. I love to act. I love to play different characters, and that's what I like to do. And when I played Anamika Anand, it was another challenging character that I played in my life. So fame has its goodness when you treat fame as fame, you know. Yeah. But when you're trying to hold on to it and you know you don't lose it and it's like it becomes your all, then that's when the bad side of fame kind of pops out.
Also, it's your own experiences in life, what kind of people you meet. I come from a very protective family. My mom and dad were always with me when I was working. So for me, my life has been very different, a different path behind the curtain, you could say. But Anamika Anand's life has been not so fortunate. So and behind many the curtains, others also, like, I mean, there are normal people. There that have we been know people who like have that. had bad experiences, and she's one of them. Yeah. Anamika Anand, where she's had bad experiences in her life, and her whole dynamics, even with her family, is very different. So I think there are goodness to all professions. There's a good side and a bad side, and I think acting as a profession also has its good and bad sides. Ups and downs. Yep. There's this really interesting line that Sanjay Kapoor's character says to your character in the show in the very first episode, which is heroes will be their grandfather's ages and they'll be romancing women their daughter's ages. I think it's really great that such a thing has been said out loud, especially in a show like this, because it is a very, very occurring phenomena in this industry, right? Ma'am, for you, why do you think this is still a thing in Bollywood? Because personally, I don't understand why. We should go with the times and get with it. I mean, do you concur? How will it change? Well, the thing is, ageism is everywhere, right? It's not just in Bollywood, it's in every profession. Everybody wants to be young, everybody wants youth. I mean, because that's what they feel is important in life, to have the youth. But I think with age, I mean, the kind of experiences that make you, and I think with age, you can do so much more, from your experiences. You can play different characters because you've met so many people, you've lived your life, and there's so much more to you than just a pretty face or someone who is talented and who can do something. But I think that's very important, and that's what happens because everybody is so youth-oriented. They all want to appear more youthful, more younger, and you have so many products in the market, and everything is towards that. But I think things need to change, and I think we need to be more real because there are real people in this world, and the reality is that everything that grows has to ebb at some point. Sure. Everything that, even trees, they grow, they flower, they die. So I think it's been beautifully said through our, series and the Fame Game. I mean, there are no words that are minced or everything is like point blank and said out loud. Ageism is everywhere. It's just that in Bollywood, it's kind of in front of your face because you see it, right? Like in other professions, not so much, but over here. So I think it's really interesting that it was said out loud. Muskkaan, I want to know your opinion on this as well, since you are a young actor and, I feel like whatever you would have to say about this would be relevant as well. See, I mean, at the end of the day, for me, it's going to be about the character. And there are certain things work a certain way. Yes, I mean, everybody works in a certain way, but I'll have to play my character. That's all. I don't know why it is the way it is, quite honestly. I have no answers for that. Yeah. But yeah, if I have to play a character, I have to play a character. I don't know. Fair. Lakshvir, being an actor who's sort of just starting out in this industry, how did you keep yourself from getting overwhelmed working with like veterans and such seasoned people like Madhuri ma'am, Sanjay sir, Suhasini ma'am? How do you kind of give yourself that reality check and stay in your zone? I think a lot of the credit has to go to them as well because they created that environment which was about the work. So automatically you also become a part of that. But at the end of the day, it's in my training. The moment I see the script, the lines, I don't think of anything else. I think of the scene, I think of the character, and that is also my responsibility. Okay. I cannot, at such a big stage, at such a big point, say ki arey mujhse nahi ho raha because kaun baitha hai samne. It's not professional. You cannot do that. You're there for a reason. You're getting paid to do that, so you have to do it as well as you can. Do you remember having any like starstruck moments? I mean, of course, the first time you see her, it's impossible to not have that. But that's very true. But as I said, she is so welcoming and she creates that space of familiarity, and usse bahut farak padta hai. So you automatically start easing the relationship and building it to a point where you get so comfortable. Like I was just saying that there were days when I was off and like not feeling great, and I would just go sit next to her, not even talk, and I would feel better slightly, from whatever I was. So that's the connection you want to build with your co-actor. Yeah. And I hope that reflects in the show as well. And I've had a ball. It did.